अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम अली हसन है और मेरा कलंदाज है और हम ये हमारी एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है बियॉन्ड द रोप्स। बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जो हमारे जहन में काफी अरसे से थी। ये हम सब दोस्तों की मिलके एक पैदावार है। हम काफी अरसे से इसको शुरू करना चाह रहे थे और अब आखिरकार ये मरहला तकमील को पहुंचा है। ये हम दोस्तों के दरमियान एक पॉडकास्ट है जो बेसिकली क्रिकेट और क्रिकेट से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के साथ है। ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड जो कुछ होता है हम उस सबको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के लिए अच्छे से अच्छा एनालिसिस और अपने अच्छे से अच्छे ख्यालात लाएं। हम भी आपकी तरह एक नॉर्मल क्रिकेट फैन ही है, लेकिन हमारा ये एक इनिशिएटिव है कि हम चाहते हैं कि हम आपका एनालाइजिंग क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस को और बेटर करें। मेरा नाम अली हसन है और आज मैं अपने बहुत ही अजीज दोस्त के साथ पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ जिनका नाम मूसा अहमद है। वो एक क्रिकेटर भी हैं और एक फैन भी हैं। बाकी आप मुझसे जानिए मूसा क्या कहना चाहेंगे आप। जी बिल्कुल। इट्स एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। पहली दफा कर रहा हूँ पॉडकास्ट, तो या आई एम वेरी एक्साइटेड। सबसे पहले अभी इस वक्त बात करते हैं क्रिकेट। पिछले चंद एक सालों से बहुत तब्दील हो चुकी है। लिटरली हर 2 घंटे बाद कोई एक नया मैच चल रहा होता है और फ्रेंचाइज क्रिकेट जिस तरह से फूल रही है उसकी तो कोई हद ही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में तो पीएसएल का बुखार जोर शोर पर है। प्लेऑफ्स चल रहे हैं और एक कमाल की ग्रुप स्टेज गई है लिटरली, क्योंकि आपको तो 5 से 10 मैचेस आराम से ऐसे गुजरे हैं कि बिल्कुल आखिरी गेम तक गए हैं और आपको पता तक नहीं होता था कौन सी टीम जीत रही है कौन सी टीम नहीं। इतने क्लोज मैचेस गए हैं और बहुत एक नए मेरी नज़र में तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग पीएसएल हुआ और शायद सबसे ज्यादा बैलेंस्ड पीएसएल हुआ। इवन दो टीम्स थोड़ी सी रही हैं शेकी, कराची की टीम भी शेकी रही है, लाहौर की टीम ने भी उस तरह से मतलब विक्ट्री हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी एक कंपटीशन की फिजा अच्छी थी, है ना। बिल्कुल। इस बार एक अच्छा चेंज आया पीएसएल में कि मैचेस आर मोर competitive नाउ compared टू लास्ट ईयर। एंड जो क्वालिटी ऑफ पिचेस है वो भी काफी बेहतर है, which makes for more exciting matches. बट अगर बात की जाए कराची और लाहौर की, काफी डिसअपॉइंट किया स्पेशली लाहौर ने, क्योंकि वो पिछले 2 सीजन्स के चैंपियंस थे, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, बट दे weren't able to deliver on our expectations. लाहौर का लाहौर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरी नजर में। जो लाहौर का था ना, इवन अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो सीजन शुरू होने से पहले ही मुझे लाहौर काफी मतलब ऑन पेपर भी अच्छी नहीं लग रही थी। इवन दो लाहौर की बैटिंग थी, लेकिन बैटिंग भी ऐसी थी कि मतलब आपके पास अब्दुल्ला शफीक है तो आपको रासी वेंडरडूसन की पिक करने की मेरा नहीं ख्याल कोई जरूरत थी। इवन दो नो डिसरिस्पेक्ट टू रासी वेंडरडूसन, उसने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आई थिंक एट दैट प्लेस रासी वेंडरडूसन की जरूरत नहीं थी। आप किसी एक अच्छे स्पिनर की तरफ जा सकते थे। उसके बाद जो ऑन द फील्ड ब्लंडर्स हुए वो काफी मतलब नोटिसेबल थे और मतलब काफी शॉकिंग थे। मतलब आप एहसन भट्टी को आप क्रश करते हो, एक ओवरसी प्लेयर जो जॉर्ज लिंडा के ऊपर जिसने काफी जो मुल्तान में जो लाहौर का मैच हुआ था मुल्तान में उसने काफी डिसेंट बॉलिंग कराई। आई नो थोड़ी सी इंजरी कंसर्न जॉर्ज लिंडा के थे, लेकिन आपको बैक करना चाहिए था लिंडा को। एहसन भट्टी का इतना मैंने तो नहीं सुना डोमेस्टिक एक्सपीरियंस, ना मैंने देखा है वो फास्ट परफॉर्मेंस भी रही है। इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक उसकी तो खास इतनी परफॉर्मेंस रही है। और इसकी काफी एक नोटोरियस स्टोरी है। नदीम उमर जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर, उन्होंने ये कोट की कि ड्राफ्ट स्किप से पहले मेरी आकिब जावेद से बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था कि आपके पास स्पिनर नहीं है। तो मैंने उनको पर्ची पे अकील हुसैन का नाम लिख के दिया कि आप शायद अकील हुसैन को पिक करेंगे। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास एहसन भट्टी है। लाइक व्हाट्स द लॉजिक इन दैट। अगर एहसन भट्टी अकील हुसैन से भी बेटर स्पिनर है, अकील हुसैन का एक कमाल का पीएसएल सीजन गया है। ही हैज बीन इकोनॉमिकल फॉर कोयटा, वो डे इन डे आउट विकेट्स भी लेता रहा है। He even उसने took a hat trick. जी He even took a hat trick against, I believe, Peshawar. हैट्रिक भी लिया है, मतलब वो काफी कंसिस्टेंट स्पिनर रहा है। एंड एहसन भट्टी
आई डोंट थिंक एफएन भट्टी हैड क्रिएटेड एनी थ्रेट एनी व्हाटसोएवर। और उसके ऊपर से फिर जो कैप्टेंसी थी शाहीन की, वो भी काफी नोटिसेबल थी। आई नो बहुत लोग आजकल तो अजीब सा सिनेरियो बन गया कि शाहीन की अगर आप कैप्टेंसी पे बात कर रहे हैं तो इट मीन यू आर शाहीन हेटर। बहुत ऐसा हो गया, लेकिन ऐसी क्रिकेट हेट और लव पे बेस है ही नहीं। क्रिकेट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। और अगर जहां तक फैक्ट्स की बात की जाए, आई डोंट नो कौन डिसीजन मेकर था, लेकिन कभी शाहीन खुद 5वें नंबर पे आ रहा है, कभी वो 6वें नंबर पे आ रहा है, कभी क्या नाम है वो सिकंदर रजा को बिल्कुल चौथे नंबर पे भेज देता है, कभी वो सिकंदर रजा को बैटिंग नहीं देता, वो जहानदार खान को 5वें में भेज देता है। जबकि जबकि अब सिकंदर रजा और जहानदार खान का कोई मैच ही नहीं है। सिकंदर रजा इज माइल्ड है, सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस आप देख लें। तो पता नहीं ये इस तरह के डिसीजन कौन करता रहा है। मेरी नजर में लाहौर डिडंट लैक इन टीम स्पिरिट, लाहौर लैक इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि आखिर जो थिंक टैंक था उनके डिसीजन एक्यूरेट थे भी नहीं। एंड द सैड थिंग वाज देयर वाज रेजिस्टेंस even in the final game press conference. The way Samin Rana came out and was explaining that क्या शाहीन ने बुरी बैटिंग की और दिस एंड दैट, आई मीन दैट वाज लिटरली डिजास्टर्स मैन। यू रेट्रो हैव ने टू ये भी एक्सेप्ट। मेंशन किया है कि सिकंदर रजा वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द IL T20. Yeah, absolutely. And what's my point is that what really sting with me that they are not even accepting defeat. They are blaming it that Rashid नहीं आया. They're blaming it that हमने अच्छी क्रिकेट खेली. They're blaming it that कि शाहीन ने कितना किसी बैट्समैन से कम बैटिंग की है. I mean that's not the point at all. It's not कि आप गली क्रिकेट खेल रहे हो और आपको क्या नाम है आपके किसी बैटर ने अच्छी बैटिंग की है तो आपको उसके 100 रुपए मिलने चाहिए। आपका मेन रिजल्ट है मैच जीतना। आप जब मैच ही नहीं जीते तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट तो करना होगा। दैट थिंग वाज प्रीटी पुअर विद मी। एंड विद द कराची थिंग इज कि कराची किंग्स कोई चेंज भी नहीं आया। आई डोंट थिंक देयर वाज अ चेंज इन द लास्ट सिंस लास्ट ईयर दिस ईयर। वही सेम माइंडसेट, वही सेम टीम, कोई अप्रोच नहीं है, कोई पॉजिटिव इंटेंट नहीं है। वही आपने उसी सेम एज ग्रुप के लोग भरे हुए हैं और इतनी ज्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। I mean, there are more good actors sitting in National Stadium Karachi in Karachi's game than there are more good players playing in the field. That's the case with Karachi. और इस दफा जहाँ तक देखा जाए लाहौर कलंदर्स का, स्पेशली शाहीन का माइंडसेट भी इतना पॉजिटिव नहीं था कमिंग इनटू दिस सीजन। अगर देखा जाए, अगर एक इंटरव्यू सुना जाए शाहीन का, ही लिटरली सेड दैट वी वन द फर्स्ट 2 सीजन्स, तीसरा तो हारना ही था। इसके ऊपर क्या ख्याल है? लोग तीसरा तो हारना ही था। आई कैन कट इन सम स्लैक फॉर दैट कि तीसरा तो हारना ही था, लेकिन जो मेन क्रिकेट का एसेंस ही यही है कि आप कंपेटिटिवनेस, एवरी गेम काउंट्स, एवरी मोमेंट काउंट्स। अगर ऐसा ही है तो आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम्स 5-5 सीजन क्यों जीती? वो 2 जीत के कहती, तीसरा तो हारना ही था, चौथा तो हारना ही था। पर स्कॉचर्स ने आई थिंक 3 किया उन्होंने भी बैक टू बैक जीते, तो वो भी यही कहते तीसरा हमने तो दूसरा हारना ही था। सो दिस इज नॉट द माइंडसेट यू अप्रोच द गेम। अगर आप ये सोचें इस तरह से तो फिर आप एक नेशनल टीम के कैप्टन हैं। इस तरह से तो फिर आप 2 मैच जीतने के बाद आप तीसरे को भी कहेंगे कि तीसरा तो हारना ही था, मैंने 2 मैच जीता हुआ था। ये माइंडसेट एक अच्छी चीज नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप राशिद खान पे इतने रिलाय थे, क्योंकि लिटरली इस मैच 10 मैचेस में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो यही कहा गया कि राशिद नहीं था, राशिद नहीं था। तो फिर आप टीम का नाम राशिद कलंदर्स रख दें, लाहौर कलंदर्स ना हो। एक प्लेयर पे रिलाय से तो आप नहीं जीत सकते। नहीं, नो डाउट राशिद खान का वॉइड फिल इन करना, इट्स नॉट इजी। ही इज वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन आप एक प्लेयर की जैसे PSL या कोई भी टूर्नामेंट हो नहीं जीतते। इट्स अ टीम गेम, और दैट्स व्हाट लाहौर कलंदर्स लैक्ड दिस सीजन। They kept depending on individual performances rather than a team performance. I will I will be a hater for that. I think there were lot of inflated egos in Lahore Qalandars camp before the tournament. Maybe not lots, but there were some one or two who thought के मतलब हम हमारे पास तो शाहीन है, हमारे पास तो रऊफ है, हमारे पास तो जमान है। आई थिंक उनका नाम सबको ही पता है। तो
और हम ये कर देंगे, हम वो उड़ा देंगे सबको, हम बाबर को तो हम आउट भी नहीं करना चाहते. I'm bringing a wrong thing into context, but I think there was an inflated ego named Akib Javed, जिन्होंने बहुत stupid decisions लिए और उनको अब और उन्होंने बहुत Akib stupid बातें Javed की और is notorious for like pushing his own agendas. जिस तरह के I mean I'd rather have Asin Bhatti over Akil Hussain and साउथ शकील के बारे में जो उन्होंने बोला था टीवी पे कि उनके छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाइट है वगैरह, इन बेसिकली बॉडी शेमिंग. एंड ही आल्सो मेड अदर कमेंट्स एज वेल कि जमान खान लास्ट ओवर का बॉलर है, सेकंड लास्ट ओवर करता ही नहीं. जब आप इस तरह कमेंट्स करेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, तो आप आगे नहीं मूव कर सकते एज अ टीम. you are just bringing your own players down. देखो आप आते हो आप एक महीने के सामने में उसके बाद आप पहले जाते हो आपकी अगर फर्स्ट करें ना आकिब जावेद इज लाइक अ लीडर ऑफ द पैक ओवरऑल इन लाहौर कलंदर्स. अगर कोई गलती आकिब जावेद उनसे कुछ गलत निकलेगा ना उसका नतीजा शाहीन को भुगतना पड़ेगा, आरिफ को भुगतना पड़ेगा इन अ सेंस कि दोज गाइस आर हिज प्रोडक्ट्स एंड देन पीपल विल से ये तो आकिब जावेद की पैदावार है, ये तो बुरे हैं, ये तो ऐसे हैं अगर वो कोई गलती करेंगे. एग्जैक्टली. एंड And नाउ कमिंग इन Shaheen ki captaincy has been questionable as well this season. In the last year, though he had a super team, लोग जितना भी argument बना लें that he had a super team, लेकिन उसने उस टीम को मैनेज बहुत अच्छी तरह किया था. इस साल वो फ्लेयर नहीं दिखा शहीन में. Why do you think that is the case? Is it his mindset or is he lacking confidence to make tough decisions? सुपर टीम इज अ क्वाइट peculiar word I reckon. सुपर टीम मेरा नहीं ख्याल उसकी टीम सुपर टीम अगर होती भी है ना तो सुपर टीम बनाने में कैप्टन का इम्पेटस जरूर होता है. एंड योर फर्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट. ही वाज on another planet in 2022 2023 PSL season, even though he was coming off the back of injury, but his confidence looked very good in 2023 season. This season भले at some points he clicked a lot of high pace like 148.8, लेकिन थोड़ा सा ना उसकी अगर बॉलिंग भी ना देखे ना तो he was easy to pick even when he was bowling fast. Like I remember उसने 143 या 145 kph पे एक बॉल डाली फुल came back in but Shan easily clipped for 4. एंड अगर उसका माइंडसेट देखा जाए तो मोहम्मद हारिस ने एक बड़ी मजे की बात की है कि शाहीन को गुस्सा जल्दी आता है. उसको अगर आप दो अच्छे शॉट्स मार दो ही कैन इजीली गेट एंग्री ऑन थर्ड वन. और ये बात लिटरली 2021 से रिपीट हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है और वो बाकी सच भी होती है. हर बार होती है, हर बार हम सोचते हैं नहीं इस बार शाहीन वो चीज नहीं करेगा, हर बार होती है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग in my opinion different in his mindset. He's rather trying too hard that मतलब मैंने आखिरी ओवर में मैंने बस स्टंप्स में डालनी है और विकेट्स लेनी है. दैट्स नॉट गोना हैपन एवरी टाइम. आपको थोड़ा डिफरेंट प्लान जाना होगा, आपको वाइड यॉर्कर जाना होगा, तभी आपको अपना स्लो बॉल यूज करना होगा. आप मुसलसल इन द स्लॉट आप लेंथ बॉल्स नहीं डाल सकते, आप यॉर्कर्स नहीं डाल सकते 6 पे 6. You are easily going to get picked away. And the problem was when he got scooped by Irfan Niazi and South Shakil. That was really depressing for me, to be honest. That this guy is our main bowler and he's getting treated like that. That's humiliating. Even though I'm not a Lahore Qalandars fan or I'm not a Koida Gladiators fan, not a Peshawar Zermi fan or whatever, but that was seriously humiliating. That even if an emerging player is scooping him, what is a Mitchell Marsh gonna do to him? What is a Travis Head gonna do to him? What is like a Josh Butler gonna do to him? They're going to smash him. Simple. That was really bad for me. And it was his mindset like he was going for a kill. He was like हर बॉल पे मैंने स्टंप्स में डालनी है, हर बॉल पे स्टंप्स पे. और फिर अल्टीमेटली जब आपकी बॉलिंग बुरी होती है या जब आपकी का जो इंडिविजुअल फैसेट है वो बुरा होता है तो आपकी गेम ऑल्सो फॉल्स डाउन. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद शाहीन अफरीदी. उसकी इतनी फास्ट बॉलिंग दिखने की एंड देन he made some obnoxious decisions in the name of aggressiveness and whatnot. I mean, but I think इतना एक यंग लड़का जब कप्तान है वो इमेच्योरिटी जरूर दिखाता है और शाहीन ने कहा कुछ स्टेजेस पे इमेच्योरिटी दिखाई and he didn't have any proper mentoring like in the last 2 seasons Yeah. in that super
you can call a super team. We had David Visa, with senior man, who was almost a good mentor. And another thing is Rashid Khan is also a senior pro, and he has captain Afghanistan to some extent, और वो काफी वीक खेला था, उसकी काफी एक्सपीरियंस है. अगर कहीं पे शाहीन फंसेगा तो राशिद भी बता सकता है उसको. तो What's शाहीन more तो depressing is that that six Wasim Jr. hit him on the last ball when you wouldn't yeah, was expect like someone like Wasim Jr. to hit Shaheen, one of the best bowlers we have seen in years, get hit for a six on the last ball when the other team needs 4 runs. those signs just indicate towards finishing everything. It indicates towards like what we call on Twitter like bad dreams, like getting finished, like what we discussed in December and January, that oh, is Babar Azam finished? Is this finished? I hope it's not the case. I genuinely hope it's not the case. I hope Shaheen has a redemption like Babar, but Babar's case was different, and people are calling now there is a sword hanging on Shaheen's captaincy. I don't think that should happen. Shaheen is No, very immature, and okay. The thing is, those Shaheen's decision this PSL has been questionable. I would still back him. He is our captain. He will lead us into the T20 World Cup. Yes, if he doesn't do well in the T20 World Cup, maybe then you can consider. But like even then, I would say back him. And if still things don't go well, then maybe you can explore other options. First one that comes to mind is Rizwan. To be honest, Luke Rizwan definitely comes to mind. There's no doubt about it. But what's the case with Shaheen is it's not easy to handle a 23-year-old or 24-year-old straight away a captaincy job. No way, because unless he doesn't have a proper guidance or a mentoring or something like that, he cannot lead. Like, and it was supposed to happen that his main powers got stolen away from him. No Rashid Khan, no David Visa, no inform Haris Rauf, and then Zaman Khan loses his form all of a sudden. Him not bowling well. It all, then when your team is not clicking, your captaincy also doesn't click too. But when there were certain opportunities, Shaheen bottled them too. There was immaturity shown. But there is a famous Hindi song that बुरा है भला है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है. So right now we are at that condition that बुरा है भला है जैसा भी है चलना तो शाहीन के साथ ही पड़ेगा. अब आप उसको 6 महीने आप रखें. आप नेशनल टीम में आई होप बाबर एंड रिजवान गाइड इन समथिंग और उसको थोड़ा चलाएं इस मामले में. और I hope he can get back to his best and start using his brain well yeah, for the captaincy job. And after the 6 months, look, we can make a decision because when Shaheen got handled the captaincy, मैंने उस वक्त भी ये कहा था, मैंने कहा था कि शाहीन हैज बिग शूज टू फिल क्योंकि बाबर आजम एक T20 में इतना बुरा कैप्टन भी नहीं था. He has played a final, he yeah. has played a semi-final, he has a decent resume Speaking of on his Babar end. Azam, I think we should move on to him. I think we've talked quite a lot about Lahore Qalandars. How good has Babar Azam been in 2024, especially in T20s? I don't know, man, that's just surreal. I mean, like, I still remember the first few days of January. There were literally talks of dropping this guy. And we were I all were mean, thinking, okay, from that, now he has scored 1,000 T20 runs in just 3 months. I mean, like, I want to talk briefly about it. Like, मैं अक्टूबर से लेकर जनवरी तक मैंने वो ट्रॉमा मैंने काफी अच्छी तरह से फील मैंने क्या पूरे पाकिस्तान ने खैर वो फेस किया. दैट वाज हॉरिबल. एंड एट द फाइनल स्टेजेस मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो बहुत फैंस बनते थे उसके और उन्होंने काफी मतलब वो एक फनी फ्रेज है औकात दिखाना वो किया है कि मतलब ड्रॉप करो इसे ये खेल क्यों नहीं रहा. तो खेल क्यों नहीं रहा Yes, अच्छा क्यों नहीं कर रहा. Zimbu, Zimbabwe, That Wash, thing is all of these. Those are when you are those great, trending these everywhere. things come in your way, and you have to tackle it. And Bauer hasn't tackled it very well. But when I want to talk about his game, he's playing so effortlessly and so smoothly. It's like a batting manual. Like it's ये इस तरह का है कि अगर कोई नया बच्चा एक क्लब में जाता है ना और वो कहता है मुझे बैटिंग सीखनी है तो उसको वो बैटिंग आप दिखाओ
और आप कहो कि लड़के ये देखो तुमने अपना फ्रंट फुट इस तरह रखना है, तुम्हारी हेड पोजीशन इस तरह होनी चाहिए, जैसे ये खेल रहा है थ्रू द कवर, ये खेल रहा है थर्ड मैन का, तुम वैसे खेलो। ये मेरा बैटिंग मैनुअल। और उसने कुछ एक्स्ट्रावेगेंट नहीं किया, ये नहीं है कि बिल्कुल निकल निकल के छक्के मार रहा है या स्लॉग स्वीप्स में होता है। वो प्रॉपर शॉट्स बस देख रहा है, सी द बॉल, हिट द बॉल, फाइंड द गैप, नेचुरल शॉट्स इन फ्रंट ऑफ द वी, एंड ही स्कोरिंग रन्स। और वो मिडिल ओवर में अच्छा लेके चलता है। He knows when to hit boundaries, when to contain, when to take singles. And the way he's playing is benefiting Saim Ayub so much that Saim Ayub literally in the first 6 years has no gear except for coming in and smashing, smashing, smashing. And he enjoys it. He enjoys batting with a partner like Babar because What he I knows what I've he seen has is insurance batting is policy. that कि वो पावर प्ले का फुल एडवांटेज ले रहा है यानी ही स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स एट अ क्विक पेस in the power play, and then he somewhat slows down in the middle. But when he gets to his milestone, let's say 50, then he picks up the pace again, which is very nice to see. It's I'm glad he changed his play style. And actually, speaking of his play style, I think a perfect example is his century against Islamabad. That was I mean, fans have been probably waiting the for that moment for so long. and I really felt that when he completed his century, आई नो जो 4 से 5 मंथ के फ्लैशबैक्स उसके जहन में भी आए होंगे कि बार बार ऑस्ट्रेलिया में डंडा हो रहा है, या निक हो रही है कभी, या कभी अंदर आ रहा है बॉल पैड पे लग रहा है, या मतलब जितनी कोशिश कर रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और इसमें मैं कुछ क्रेडिट देना चाहूंगा मैं पिशावर करने की मैनेजमेंट को भी। लाइक आई हैव क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन और उसने मुझे एक ये बात की थी कि कभी कभी आपको ना बड़े रन करने के लिए मुसलसल प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती। कभी कभी आपको एक फ्री माइंड और आपको अपने कोच के साथ एक अच्छा गोल्फ का सेशन भी बहुत हेल्प कर देता है। Because एंड विद डैरेन obviously एक बाबर के लेवल का प्लेयर को आप क्रिकेट नहीं सिखाते उसे, आप सिर्फ उसको मोटिवेशन दे सकते हो. you cannot, you can never. And this is the thing we discussed a lot in December that Babar Azam needs a consolidation hand with what has happened with him. And the captaincy agenda, the tours, whatever. He needs a consolidation hand that Babar, you are all right, Babar. Nothing is wrong with you. Just trust your game, trust your instinct. Go out and do what you have done in the last 8 years. And I think with Darren Sammy, this really happened with him. Like there's after every 2 overs, Darren Sammy is on the boundary, chatting with him there. And there are BTS coming of them playing golf, moving around in the next session and whatnot. And this shows really good chemistry and real good belief in Baba Azam too that I, I can do it. I have a good coach, and even though if I get a training session here or there in fun, I can still do it because I can trust my game, I can back my skills, and I can do. I can score runs. And that's 100 against Islamabad was probably a piece of poetry in T20 game. You cannot. I think that 23 run over was unbelievable. Like I was literally, my hands were on my head, like on the fourth wall. That how? What is he doing? What has he? What has he? What has he? What he drank in the drinks break? In the drinks break, that he just all of a sudden he just switched to another level. It's unbelievable. Unbelievable. I think his captaincy has also gone improved a lot. Yeah, I've that's why seen he. I was sorry to cut you off. That was I was against PCB removing Babar Azam from captaincy because he's already been captain for 4 years. Like for example, Imran Khan. It was not like Imran Khan won his first World Cup like instantly. It took him at least 12 years to win his first World Cup. So you back your captain that won you a series against Australia, which hadn't been done in over 20 years. He won you a series over New Zealand. He took you to the semi-final and final of the World Cup. Why would you remove him? And now I'm sure that they don't regret it because why would they care about Babar? But I still think that Babar is better captain in T20s than Shaheen, to be honest. Uh, that's a whole another stratosphere level. That who's better captain, who's not. But in my opinion, he at this point he looked more mature than he looked in 2023 World Cup. He knew what bowler to bowl at what stage,
what decision to do. And in this moment, he probably had a better management and a better, we can call a vice captain in Roman Powell. I don't know who's the vice captain, but he has playing that role. He's playing that role of vice captain. He's continuously in chat with Baba. He's a West Indies captain, and he's won a series in South Africa. He's won a series against England, and he's continuously in touch with Baba during the game. That what field to set, what to not. Darren Sang is Yeah. talking with Baba. The captaincy thing is very different. You cannot turn it on one man or a second man. And the Babur saga of captaincy is a whole different podcast. I can talk on for 3 hours on that particular topic. Kaptani, Yeah, एक it's ऐसा like नहीं a है. whole different idea or a whole different topic. But actually, we should move on. I think we should move क्या on मैं to Karachi Kings. वो कप्तानी How abysmal was their season? मैं आपको मजे की बात बताता हूँ. कप्तानी ना हमारे पाकिस्तान में बहुत बात होती है बॉर्न लीडर बॉर्न लीडर बॉर्न लीडर. पैदा होता है कोई लीडर नहीं बनता. लीडर बनाने होते हैं. अब पाकिस्तान में उसके पास एक मशवरे देने के लिए है शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शनाब खान. Among all of these guys, I think Rizwan is the most mature. Rizwan ने भी इंटरनेशनल लेवल पर कैप्टनसी की नहीं है अपनी. पीएसएल में 4 फाइनल्स पहुंचाए हैं, लेकिन वो तो शाहीन शाह अफरीदी भी 2 पीएसएल जीता है इससे. तो उतना आपका मैं रिजवान को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन पीएसएल का लेवल पे तो फिर शाहीन भी एक चैंपियन है, लेकिन शाहीन उस तरह नहीं कर पा रहा. तो कप्तानी ये जो है अकेला बंदा नहीं करता. मैनेजमेंट पाकिस्तान में कभी कॉन्टिन्यूस रही नहीं है. 6 महीने कोई कोच रहा है, अगले 6 महीने कोई कोच रहा है. ग्रैंड पैटर्न वॉज द कोच द वर्ल्ड. उसके बाद फिर जो है मोहम्मद हफीज आ गए. मोहम्मद हफीज के बाद अब पता नहीं कौन आएगा. तो मैनेजमेंट का परमानेंट ना होना और ऊपर से साथ में आपका एक एक्सपीरियंस पार्ट टीम में का ना होना जो आपको गाइड करे इस मामले में, वो भी काफी इफेक्ट करता है. बाबर की कप्तानी में काफी गलतियां थी भी सही, लेकिन एक और चीज अगर हम नोट करना चाहें तो he didn't had much proper mapping through his team. He had a good environment. He had created unity, but he didn't had that tactical backing. कि मतलब उसके साथ कोई अच्छा टैक्टिशियन था नहीं. He usually had to do all of the Speaking of stuff all on his own. these captains, अगर हम शान मसूद की कराची किंग्स की जरा बात कर लें. Yes, go ahead. So यानी obviously कोई खास expectations नहीं थी कराची किंग्स से इस साल, and they proved to be just that. They weren't that great. But ये तो हर साल की बात बन गई है कि कराची किंग्स हैव बीन बैड. Their selection has been awful. Their overall mindset is very negative. लेकिन अब मैं हमें इस चीज में बात करनी चाहिए. How can they change that? How can they improve next season? I think probably getting rid of player by ownership. First of all, it can be harsh, but I think that's the only solution. You gotta get rid of that. Like literally, स्टेडियम में ना कराची किंग्स की टीम से ज्यादा अच्छे एक्टर्स बैठे होते हैं स्पेशल लाउंज में. एक्टर्स आर लुकिंग बेटर देन कराची किंग्स प्लेयर. मतलब एक्टर्स की ज्यादा रेपुटेशन होती है कराची किंग्स के प्लेयर्स की. एंड दैट्स द कंडीशन ऑफ दैट टीम. After every two balls, the camera is going towards particular actress, which is the wife of a player. I don't want to take the name, and I don't want to be a public, make it public or something like that, or shame anyone. But ऐसा ही होता है. There's literally all PR, all function towards कराची किंग. Like एयर वायर पे चलता है PSL की सबसे मकबूल तरीन टीम कराची किंग. Like is this a joke? कौन सी मकबूल तरीन टीम भाई? उनके कराची के अपने लोग नहीं पसंद करते उस टीम को. मेरा एक दोस्त है, वो इस टीम से इतनी नफरत करता है ना, जब से बाबर आजम ने उस टीम को छोड़ा. ये लिटरली हेट्स एंड बेग्स फॉर देयर डाउनफॉल. कि मतलब इनका तो वही बैंड बजे ना, ये तो रास्ते से साफ है At मेरे. one point used to be good. They had Iman Wasim, they had Babar Azam, Muhammad Amir, who was whatever we say about Amir, he was really good with the new ball, and then he was really good in the death as well. And obviously, he could help out with his experience. And they also had really young guys who were shining brightly in. Young, Obviously, I'm talking about season. I believe they won season 5 or season 6.
they bottled every single young player on earth they ever got for No, some when old like foot. whenever a new player has a great performance or great outing in a particular season, they always somehow manage to waste them, which is unfortunate. Because they don't have a cricketing planning. They don't do scouting. They don't. I have never seen Karachi Kings being active when the PSL is over or when it's, I mean, September, October. I've never seen them active doing scouting, doing PDP programs like Qalandars or something like that. They just literally show up, pick the randomest players in the draft. They do their branding, they make money, and they leave. This franchise is not a cricketing franchise. This franchise is a business. This franchise is a business. A business is used for business. Literally used for business. Yeah, Salman makes money out of it. Salman Iqbal gives his favorite actors privileges in this franchise. He gives he gives his favorite singers songs for Karachi Kings, and he leaves. Nothing more happens. And for that, for Karachi to be better, first thing is एयर वाइज से साइड करो इस फ्रेंचाइज को. सलमान इकबाल को छोड़नी होगी. किसी ऐसे इंसान को लेनी होगी जो वाकई इस फ्रेंचाइज को भला चाहे. साफ सफाई करें शुरू से. साफ सफाई इन्होंने खैर अब भी की है लेकिन वो किसी काम की नहीं थी. true. आप जो आप यंग प्लेयर्स हैं उनको रिटेन करें. शोएब मलिक को अब भले हार्श है लेकिन फिट तो मैं भी हो सकता हूँ. कहने को तो मैं भी 19 साल का हूँ, मैं फिट हो सकता हूँ. मैं भी जाके खेल सकता हूँ. फिर फिटनेस अगर खेलने का मैट्रिक है तो दैट देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग. जरूरी नहीं है आप बिल्कुल क्या एक 41 years old है. He's finished, he's all. Yeah, they I know literally he's dropped. Sorry to cut you off. They literally dropped Saad Beg after one game. I think he was injured. He has some injury. ठीक है, यानी डक कर ली है, ये डक आउट पे हो गया है, लेकिन आप उसको बैक तो करो. मैं वही बात कर रहा हूँ. अगर मैं वही बात कर रहा हूँ कि सलमान इकबाल इज मेनली यूजिंग दिस फ्रेंचाइज फॉर हिज ओन प्रिविलेजेस और फॉर हिज एयर बाय डिजिटल टीम्स प्रिविलेजेस. वो गाने बनवाता है कराची किंग्स पे, उसमें एक्टर्स आते हैं. मैच होता है कराची किंग्स का, आपको एक पूरा लाउंज 20-25 लोगों का भरा हुआ मिलेगा जिसमें एक्टर्स बैठे हैं, मीडिया पर्सन बैठे हैं, वो खुद बैठा है, उसकी फैमिली बैठी है. His son is literally creeping around with the franchise players and the coaches, which is so inappropriate, so inappropriate. That's Yeah, it looks like a privacy breach. It looks like a privacy violation of the team. And for that, as for Karachi to be better, उनको young players में invest करना होगा जैसे पेशावर ने किया, जैसे लाहौर कलंदर ने अपने पीडीपी में किया, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2017 में शदाब खान पे किया. ये करना होगा और एक प्रॉपर रन देना होगा. Heather Hazard's arrival at Karachi was good. I really liked it. But I don't think Heather Hazard can have such this much impact. जब उसके हाथ पे कायरन पोलार्ड होगा 40 साल का और 40 साल का शोएब मलिक हो. नहीं, if you really look at it, अगर पहले हम उनकी पहली बैटिंग ऑर्डर को एनालाइज करें, their top order has been a flop. Most highest dot percentage by Karachi Kings. यानी शान मसूद, firstly अगर देखा जाए, he before the PSL, some people actually wanted him to be a part of the next England series when Pakistan will tour England for 5 T20s. They wanted him to be in the Where squad, but now I don't think he will even make any future squads for Pakistan aside from the Test squad, of course, because he's captain. Shan has always been a privileged kid. To be honest, at some point he has shown that he can do, and he does work really hard for it. तो शान का वही केस है ना कि when you're not that, when you don't have that fire, you don't have that. वो कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं specific material to play that game. Some people have that dog in it. Shan sometimes doesn't seem to have that dog in it to come out to be fired up and leave. He has improved a lot in Test match cricket, but from improving from 28 to 30 average sometimes seems a bit off, a bit iffy. He's doing well in Test cricket. I think he has improved a bit in Test cricket, but I would definitely want him to do better than that because People we don't expected have him enough. to at least have a decent outing this season.
considering how much he has improved in Test cricket. Like, for example, like he is stepping out against Nathan Lyon in Australia, but he's unable to play Akil Hussain. No disrespect to Akil Hussain, but like he's no Nathan Lyon. I mean, I felt that some people have a dog in him to come out and be fun and fired up and do come out and bang 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 go on and on and on. Sean doesn't sometimes seem to have that. He sometimes just loses it. Just can't do it anymore. In Test cricket, he's trying to improve his game, and I think we have to in Test cricket. First of all, Sean is captain, and Sean did well in Test cricket. And we don't have a number three after us already, so we have to back him. And I think he should be sidelined for Test cricket only. His main focus should be Test cricket, and the Yeah. more he can improve, he can be in Test match cricket. And that's what I can say about Sean. And what about Pakistan cricket? Well, I think we should close this segment here and we should move on to Quetta Gladiators, who, to be honest, surprised us this season. Nobody even expected them to make it to top four. And now look at there's a match going on right now. They're losing, but still, it was a decent season for them. Quetta, there were changes, there were some breath of fresh air changes like making Riley Russo captain. I knew it, they took a punt, but it worked. And Shane Watson coming in, Sean Tate coming in, the Aussie mentality, it definitely works, particularly in Pakistan culture. It works. And then they had a decent bowling attack in Wasim Jr., Akil Hussain, Abrar. Abrar has been wonderful, literally Bravo, wonderful. really good. The way he's bowled really impressed me, and he can be a solid contender for the World Cup. But that's a long way to go. So, Yeah, before same here. before the PSL, there was actually doubt that because of fitness issues, he might not be able to play the PSL, and thus he may not be considered for the T20 World Cup squad. But fortunately, that wasn't the case, and he impressed everyone. And he has been interesting. He's been wearing his pace. His line length has been good. It's not like he wandered around too much outside of some or he's bowled too full. Which Sharaf Khan sometimes does. But he has been very good. And Akil Hussain has been a good partner to him. And another off spinner, Usman Tariq, still call whatever his action is, but he has done his part. He's contributed well. So the good thing about Kota is that even though their batting hasn't been a proper like so they have three guys of 50 plus average, their bowling is doing well and their Yeah, batting has done enough to carry them towards the playoff. And it is all about a team combination. And Quetta has shown that this tournament that their team contributed well, even though Riley Russo was not in form. The middle order hasn't been that much of a like a solid impactful part of the game portion of the side. But they have still done well and it's commendable. yeah, and I think it's a good time to wrap up this podcast and just finish off with the future of PCT as a whole after this PSL concludes. So, how do you see the World Cup squad shaping up? To be honest, right now, that's a pretty bothering question. I've been thinking about it since probably the start of PSL that the spots in this team are very empty. Like, हमें ये नहीं Aside पता from, of हमारा मैच में course, your obvious ones like Shaheen, Babar, and of course Naseem. And currently, we are still unsure about Haris Rauf. I have a question But right now. yes, Does Baba can Baba open again? can Babar open again? Well, yes, in my opinion, he seems to be doing okay. Like not okay actually. They did amazing in the New Zealand series, but I don't know. I have mixed emotions on this. I still believe that Babar is a good opener, and especially with Simon Ayub, like it could be a deadly duo. But it really depends if Shaheen is willing to experiment in the England series. To be honest, There's a New Zealand series on the card from 18th April, and that will be an interesting one because I don't know what team of New Zealand comes, but I care about Pakistan team. I will want to see different combinations. Maybe
shuffling Rizwan down the order because he has been decent, but not that much of good, which you expect from Rizwan. And another thing is we don't have a So mention. people Yeah, have been saying that Rizwan hasn't been good, but if you look at the PSL stats, he's the second highest run scorer at the moment. but if you look at his innings, he has been literally making 50s on 45 balls, 43 balls. And oh, he had Yeah, one good innings. he doesn't have the same flair to him, but he hasn't necessarily been bad. But he hasn't been up to that part where Babar Azam scored, where Saumya scored, or where other openers scored. His intent has definitely been an issue for a long time now, since the New Zealand series probably. So I would love to see this one probably compromising a bit, maybe moving to one down or something like that, or maybe getting a rest because he's played PSL, he played Australia series, he played, I mean, But BPL, some the people New have Zealand some series. absurd takes regarding Rizwan. I won't take the names, but some people have been saying that Rizwan should go three down permanently, which is a horrible idea. No, he can't. He can't. Maybe two down or one down, but three down is too low. This game is not functioned to be three down This guy in literally has T20. an average of 50 in T20s. He was, I believe, T20 Player of the Year in 2021 or 2022. Like, how could you even fathom taking this guy down to number five? Look, Rizwan's position over the past few months has been pretty critical, and I too have been critical because the way he plays, he can literally put pressure on his non-striker, like playing the dots and fingers, and then the other partner will have to take chance, and in that case, the other partner can lose his wicket, and it very often happens in T20 cricket. And this is something which you do not want as a batting To be style. fair, I think he's just maybe a little bit, he's having a little bad patch. But I Maybe you do can think he call will come back. both are, in my opinion, Rizwan Shine both are right now in a struggling phase. Rizwan's captaincy has been top notch, but with the bat, he hasn't been that much impressive. And regarding spinners, actually, because spinners will be crucial in the T20 World Cup. So far, it's looking like Abrar. Shadab was brilliant this PSL season, but hopefully he carries this form into international cricket. Same case with Shadab Osama Mir. looked like the Shadab Khan of 2021, 2022. His eyes were lit up during this whole PSL. He looked energized. He looked more, you know, inclusive in the game. He looked switched on. He didn't look switched on throughout the 2023 year, man. He didn't. Not even a single moment where I thought that, yeah, today Shadab looking energetic. He looked pretty slow and pretty, I mean, mellow going, but in this PSL, it looked like he had the same intensity which a young Shadab Khan used to have in 2018, 2019. Yeah. He looked that he looked like the past Shadab Khan which we used to see, which we love, and the Shadab Khan which gave match-winning performances for Pakistan. And I would love to see him emulate those international colors and definitely bring that guy back in the side and the scene will come back. Yeah, but Shadab has been brilliant. And speaking of brilliant, Osama Mir, he's currently the highest wicket taker of this season. Some of his case is very, Also, before you can you call say anything, it one thing I had to mention. There was apparently, according to spin coach of Multan Sultans, Osama Mir apparently had an issue with his action. And the fact that Alex Hartley, out of all people, was able to fix that and not a legendary spinner like Saeed Ajmal is quite disappointing. how much of a coding experience the Saeed Ajmal has. I can't remember. Can't remember Saeed Ajmal really coach some. I mean, he has been a coach of Islamabad United, but I think he was mentor there. And the thing with Osama is that Osama has always been good in me. He played the 100. He has been a literally a man of the valuable player for Manchester Originals, whether it's with the bat or with the ball. In the national team, I don't think he can't even middle one the boundary, and he has been playing scoop shots for Manchester Originals.
And whether it's PSL, he has been brilliant, but international colors, he has been too easy to pick by everyone. He literally had a great domestic season. He had 62 wickets in 41 games before coming into Pakistan team. He performed well in the home series, but as soon as the big season started, he collapsed. Yeah, hopefully he carries this brilliant form into international cricket. And to end off, let's talk about finishers for Pakistan cricket. And at the moment, Iftikhar Ahmed is in brilliant form, and so is, well, nobody really expected it, but Salman Ali Agha from Islamabad United. Look, I was an advocate for Salman Al before the PSL. I was sitting one day and I was making these combinations and I thought, yeah, maybe Salman Ali can have a chance because he can bowl decent offense. He's a good fielder, and maybe if he can wrap up the strike rate, he can be the guy which we want. And in this PSL, he did pretty show that, but it will be interesting to see his order where he has batted at three for Islamabad United. But at number three, you have Babar Azam. So where are you going to adjust him? Maybe at four down, maybe at two down. So I think he might get a chance, but it will be interesting to see where he will bat and how will bat in national colors. Because at the end of the day, whoever performs in PSL, it's good. But the main question is, can he emulate that in national colors? And that's what I want to see. That's what you want to see. That's what the people want to see. And that's what counts. So I hope Exactly. that the all can emulate it. And I think this is a good moment to end the podcast. And I pray, I hope we get to see the better times of Pakistan cricket. We get to see our team doing well, and we get to see Well, I think that wraps it up. it's been and good night, have fun, and goodbye. We should wrap it up. Thanks for tuning into Beyond the Ropes podcast, and we hope to see you in another episode. Allah Hafiz. Goodbye.